Students, now you will see the summary of the last lesson, chapter 1 from class 12 CBSE. Here in the chapter, as it is written by Alphonse Daudet, I would like to say the main characters of the chapter. As you will see, French, who is the main character, with Mr. Hamel, and the third are audiences. Among audiences, you will know about the villagers, and the setting. Whether in the chapter it is told about Alsace, the schools of Alsace and Lorraine. What happened in the chapter at the very beginning? It is told that there was a conflict between that German and France, and after in the fight, France was captured by those German, and so it is the last lesson by the teacher, who is Mr. Hamel here in the chapter. It is at the beginning told that French had prepared his lesson. And what about the lesson is talked about? That is participles about. And in the class, participle was to be asked by the teacher. And he was preparing, but what happened? This French, who was not clever in study, he was not so laborious, and so finally he had never cared in the classes. In class, always he had ignored the lessons, but now it is the time where he had to reply about participles. But again he was late for the school, and when he was going in the way, he could get the signboard, a bulletin board, whether always it was written with some of the important things, as from the war like things, otherwise anything what happened suddenly in the local areas. French was surprised to see to his teacher, Mr. Hamel, when he saw he was in his green coat and cap, silk cap that was embroidered, and usually he used to wear at very special occasion, but it was not the Sunday time, but he was in a special wearings, so he was totally surprised. And again the conditions around the campus, the school, was so surprisingly, he could not see even a student going or roaming hither thither. He could see finally they all were in the classroom and teacher was teaching there. When he entered, as he was expected, he would be escorted by his teacher, but it did not happen. The teacher politely told, okay, sit at your place, and he got a seat. He was astonished, what is going on today? And then he saw the teacher also did not ask any question from participant. He was lecturing, and in that course we told it is the last lesson, and it is due to the war, whether from Berlin we have got the order there will be no lesson of French now. The students would be taught the German only. Now he could see why the villagers were attending behind. The villagers had got their seat on the last benches. They were also listening. Where he had a burden of books,
always. But now he was thinking that, oh, how stupid I was. I could not learn enough in French. In that course, he was thinking how much to learn about the French. The teacher started the participles and he was thinking to grasp each and every topics by heart. And really he was assuming that he had got enough. The teacher also wanted to teach the day from his full heart. And in that course, after teaching, when the time came to finish the lesson, he told that there is a problem with you and you could not understand your own mother tongue is French. Whether the time came to the last. And this is only due to your parents. Your parents did not convey for such a study, and so you could not understood your mother tongue. And I'm also responsible for this. Whether I like, I gave you holidays and I went for fishing. So I'm too guilty as you could not understand your French language. But it is a regretting time because I'm going to finish the lesson, the last lesson of your French language, and I can't do anything for it. Vive la France, he told at the last when the last bell rang. And thus the chapter has ended. I would like to say everything in Hindi. As you listened about the chapter, in the chapter जैसे कि बताया कि लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है, और यह जो युद्ध हुआ है जर्मन और फ्रांस के बीच में, उसमें बर्लिन ने ऑर्डर दिया है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ जो स्कूल ऑफ अल्सेक और लॉरेन है वहां पर सिर्फ अब जर्मन की ही पढ़ाई होगी। और यह बच्चा फ्रेंच जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, वह अपना लेसन एक याद किया हुआ है पार्टिसिपल, बिकॉज उसके टीचर जो मिस्टर हैमेल है वो पढ़ाने वाले थे और ही हैड टू आस्क क्वेश्चंस, उन्हें क्वेश्चन भी पूछना था। तो इस क्रम में उसने पार्टिसिपल याद करना चाहा और स्कूल के लिए वह लेट होता है, दौड़कर जब भागता है स्कूल के लिए, उस क्रम में वह देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड है जिस पर अक्सर खास खबरें हुआ करती थी, युद्ध संबंधित खबरें हुआ करती थी। वह जब जाता है तो स्कूल कैंपस में भी कहीं भी चहलकदमी नहीं पाता, सभी बिल्कुल शांत से पड़े हुए थे। यहां तक कि पीजन्स का भी चहचहाना उसे सुनाई नहीं देता है, और बच्चे पूरे वर्ग में बैठे हुए हैं, और तब नजरें पड़ती हैं मिस्टर हैमेल पर, जो एक खास तरह के पोशाक पहने हुए थे, यूनिफॉर्म उनकी, जो कभी कभी संडेज को वो देखा करता था किसी स्पेशल ओकेजन पर। लेकिन अचंभे में पड़ जाता है कि उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था और सिल्क एम्ब्रॉयडर कैप लगाया हुआ था। जब वर्ग में प्रवेश करता है तब भी उसे डांट नहीं मिलती है, वो अपना सीट पकड़ता है और क्वेश्चन भी मिस्टर हैमेल नहीं पूछते हैं। ये सारी चीजें अचंभे में डालने वाली होती हैं। लेकिन जैसे फिर कुछ लोगों को भी देखता है जो विलेजर्स हैं, ग्रामीण हैं, पीछे के बेंचेज पे बैठे हैं, वो उसे और अचंभा में डाल देता है। लेकिन जैसे मिस्टर हैमेल ने कहा कि अब तुम्हें अंतिम पार्ट पढ़ना है, लास्ट लेसन पढ़ना है, और यह फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई होगी। अब सारी चीजें समझ में आ जाती हैं फ्रेंच को। इस क्रम में वह चाहता है कि कितना ज्यादा मैं पढ़ लूं,
फ्रेंच जो कभी उसका जो है वो किताबें जो बर्डन हुआ करती थी, आज उसे लग रहा था कि अरे बहुत सारी चीजें पढ़ लेता, और टीचर भी अपने हार्ट से, हृदय से जो है, दिल से बहुत सारी चीजें पढ़ा देना चाहते थे, लेकिन इट वॉज द लास्ट लेसन और सब कुछ संभव था नहीं। फिर उन्होंने पार्टिसिपल्स पढ़ाने के बाद जो है जब देखा कि समय आन पड़ी है, लास्ट बेल लगने वाला था, तब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, मेरे पेरेंट्स जो बच्चों के हैं, उन लोगों ने जो है कभी पढ़ाने की कोशिश नहीं की अपने बच्चों का, इसलिए वे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और मैं भी कम रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैंने भी जो है जब भी फिशिंग करना था बच्चों को छुट्टियां दे दी और चल दिया फिशिंग करने, और इस क्रम में जो है मैं भी दोषी हूं कि मैंने जो है आपको फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ा सका। एंड दस द टाइम केम एंड ही टोल्ड वाई लाफ फ्रांस बैड सैड, और जो है ग्रिफ को जो है दिखाते हुए, और वो जो है इस लेसन को समाप्त करते हैं। बस इट वॉज एंडेड।